Hello everyone. So today I'm going to discuss about total differentiation. Previously I have discussed about partial differentiation. Means there the function z is depending on two independent variable x and y. At the time, in the case of partial differentiation, we take first y constant and x varying, or then we take x constant and y vary. So we do partial differentiation in that way. But here, both the variables vary. So we will find out the total differentiation. So we say that we have a function z is depending on the variables x and y. और उसमें जो इंक्रीमेंट होगा x में इंक्रीमेंट होगा डेल्टा x, y में इंक्रीमेंट होगा डेल्टा y. Means delta x and delta y be the increment in x and y respectively. तो delta x delta y तो x और y का इंक्रीमेंट है. We say that increment in z is delta z. तो इंक्रीमेंट जो है delta z होगा corresponding to z. So what we do that we take z plus delta z. अगर हम z में डेल्टा z इंक्रीज कर रहे हैं तो वो फंक्शन में जो कि डिपेंड करता है वेरिएबल x और y पे, उसमें भी इंक्रीमेंट होगा. मींस z प्लस डेल्टा z इज इक्वल्स टू f x प्लस डेल्टा x comma y plus delta y. So we name this equation as 1 and this as equation 2. Now if we subtract 2 from 1, what we get from in the LHS? We get delta z. तो LHS में हमको मिल जाएगा delta z, and then we see RHS. RHS we get fx plus delta x comma y plus delta y minus fx y. We name this equation as equation number 3. तो यहाँ पे हमें डेल्टा z मीन्स इंक्रीमेंट इन z हमें इस तरह से मिल गया. अब हम एक टर्म ऐड करेंगे f x y प्लस डेल्टा y ऑन दी RHS. इसको एक बार ऐड करेंगे तो एक बार सब्ट्रैक्ट भी करेंगे टू मेक इट 0. तो जो सब्ट्रैक्शन वाली टर्म है वो हमने इस टर्म के साथ लिखी. मीन्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी राइट दिस सब्ट्रैक्टिंग टर्म मीन्स विद माइनस साइन. जो टर्म हमारी है we will write here fx comma y plus delta y delta x divided by delta x, and the addition term of fxy plus delta y we write with minus fxy. Means fxy plus delta y minus fxy we write here. So when we see that x is varying, see here x plus delta x increase हुआ था और यहाँ पे x है, but y remains same. Means here y plus delta y था और यहाँ पे भी y plus delta y है. तो यहाँ पे इंक्रीमेंट किस में हो रहा था? Increment is in x. So here we will multiply by delta x or delta y. और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसमें जिस वेरिएबल में चेंज हो रहा है हमने उससे मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड किया. Similarly in the RHS, fx comma y plus delta y minus fxy delta y by delta y. Because here we see that y is changing and x remains same. वेरिएबल x सेम है, y प्लस डेल्टा y से यहाँ y है. So we multiply with del y and divide by del y. So in the next step we will take limit delta x take
limit delta x tends to 0 and delta y tends to 0. तो जब इसमें इस एक्सप्रेशन में हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल्टा वाई टेंस टू 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन विल बिकम एज dz RHS. In RHS we can write delta f by delta x dx plus delta f by delta y dy. So dz is called as the total differential of z. Now we see a corollary. Corollary 1. Differentiation of composite function. Means if z is equals to f x comma y, z function है x और y का, where x is depending on the variable t and y is also depending on variable t, but x is a function of phi t and y is a function of psi t. Both are different function of t. So we say that dz is a composite function of t. Here z क्या हो गया, composite function हो गया t का. तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है टोटल डिफरेंशिएशन या टोटल डिफरेंशियल की, इसको हम इक्वेशन 4 कहते हैं और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे dt से. डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय dt तो हमें क्या मिलेगा, dz बाय dt इज इक्वल्स टू dz by dt is equals to delta f by delta x dx by dt delta f by delta y dy by dt. यहाँ पे हमें ये मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे कि हमने अभी माना कि z हमारा क्या है, कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और ये एक एक्स वाई जो है दोनों फंक्शन है t के. ठीक है, तो हमने जो हमारे पास टोटल डिफरेंशियल है, टोटल डिफरेंशियल को हमने कैसे लिखा था कि टोटल डिफरेंशियल इज डेल एफ बाय डेल एक्स dx प्लस
डेल एफ बाय डेल वाई डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे डी जेड बाय डी टी हम करेंगे, और यहाँ पे भी डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स डी एक्स बाय डी टी, डेल्टा एफ बाय डेल्टा वाई डी वाई बाय डी टी। और एफ क्या है? एफ इज जेड, मीन्स f is a function of x, y, z. So we can write also here in place of f delta z by delta x dx by dt, delta z by delta y dy by dt। ठीक है, सो इसको हम कहेंगे टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ z। dz by dt क्या कहलाएगा? टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ z। टोटल now we have another corollary, corollary 2। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है z which is a function of two variable x and y। तो यहाँ पे जो x है वो डिपेंड करता है दो वेरिएबल्स पे, and we say that it is a function of u comma v। So we say that x is equals to phi uv and y is equals to psi uv। ठीक है, अभी इससे पहले हमने क्या किया था कि x we have taken as a function of t and y as a function of t, x is equals to phi t लिया था, y is equals to psi t। But here we are taking that x is not a function of only one variable but two variables। Similarly y is also a function of two variable u comma v। तो हमें इक्वेशन 5 के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? We can write that डेल्टा z, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं, डेल्टा z विद रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं, वी कैन राइट डेल्टा f बाय डेल्टा x और डेल्टा x बाय डेल्टा u। ठीक है, प्लस डेल्टा f बाय डेल्टा y डॉट डेल्टा y बाय डेल्टा। वी हैव यूज दिस इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह देंगे, क्योंकि जब z डिपेंड था x और y में और x जो है वो t पे डिपेंड था, तो हमने कहा dz by dt is del z by del x dx by dt del z by del y dy by dt। अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ x t पे ही डिपेंड था, तो हमने यहाँ पे dx by dt ले लिया।
बट यहाँ पे क्या है, x केवल t पे डिपेंड नहीं है, यहाँ पे दो वेरिएबल है। तो जब दो वेरिएबल की बात आती है तो हम टोटल डिफरेंशियल नहीं ले सकते, हमने यहाँ पे फिर पार्शियल डिफरेंशियल लिया, हमने यहाँ पे dz by du नहीं लिया है, we have taken the partial differentiation del z by del u. Now first we will differentiate with respect to x, and x is a variable of as x depends on u, so we have taken delta x by delta u and delta f by delta y, delta y by delta f. So using that uh, previous corollary, I can write here in the bracket too, that is we have used this dz by dt is equals to delta z by delta x dx by dt plus delta z by delta y dy by dt. तो यहाँ पे हमने टोटल डिफरेंशियल लिया था विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों टी के ही फंक्शन थे, बट यहाँ पे एक्स और वाई यू और बी के फंक्शन है। तो जब हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो पार्शियल लेना पड़ेगा। अगर एक ही का फंक्शन होता देन वी कैन टेक द टोटल डिफरेंशियल लाइक वी हैव यूज्ड इन द corollary 1, what we have get in the corollary 1. सो ऐसे फिर हम लेंगे डेल्टा z विथ रिस्पेक्ट टू v, मींस डेल्टा f बाय डेल्टा x and delta x by delta v is then delta f by delta y and delta y by delta v. So this is the corollary 2. ये corollary 2 है, ये corollary 1 थी. This is we get corollary 1 in which the z is a function of fxy and x y are also the function of two variable. So we can write in this way, partial differentiation of z with respect to v and partial differentiation of z with respect to v here and z with respect to u here. Now we will solve some of the problem related to this. Suppose we have given u is equals to x cube plus y cube, where x is equals to a cos t, comma y is equals to b sin t. Find du by dt. So here given u is equals to x cube plus y cube, and here x is a function of, we can see that t, y is also a function of t. So we can write using corollary 1, we can write du by dt is equals to del u by del x by, or here we are having only
dependence on one variable, so we can write dx by dt plus del u by del y dy by dt. Okay, so del u by del x we write here. del u by del x हम इसका डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, so that will be 3x square. एंड dx by dt हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका with respect to t, so that will be minus a sin t. फिर del u by del y we get 3y square. फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे with respect to t, we get b cos t. ठीक है, so what we get, 3 कॉमन है and inside we get x square a sin t, एक्स स्क्वायर ए साइन टी. तो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन भी है, सो वी राइट हियर माइनस प्लस वाई स्क्वायर बी कॉस टी. So in place of x we can write the value of x which is given. X is given as a cos t, so we will write 3 माइनस x की जगह हम रख देंगे a स्क्वायर a cos t और x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर cos स्क्वायर t और इंटू a sin t पहले से है. एंड वी कैन राइट हियर y स्क्वायर की जगह हम रख देंगे b sin t, मतलब कि y की जगह रखेंगे b sin t माइनस y स्क्वायर की जगह रखेंगे b स्क्वायर sin स्क्वायर t. So here we can write like this. So we will write this term as first term because it doesn't have any negative sign. So we can write b cube sin square t cos t minus cos square t. ओके, a क्यूब भी है, a क्यूब cos स्क्वायर t sin t. तो ये आ गया हमारा du by dt. Now we will solve one more problem. ये है हमारा du by dt. Suppose we have given if w is equals to f x y. ठीक है, w is a function of x and y and x is a function of r cos theta, मतलब x r और थीटा पे डिपेंड करता है एंड y भी r और थीटा पे डिपेंड करता है, बट एक अनदर फंक्शन है y is r sin थीटा. तो हमें शो करना है, शो दैट डेल्टा w
by delta r whole square plus 1 upon r square delta w by delta theta whole square is equals to delta f by delta x whole square plus delta f by delta y whole square. So here we can see that x is depending on two variables. So we will use here corollary 2. मतलब corollary 2 के according हमें यहाँ पे first with respect we will take the partial differentiation with respect to r and then with respect to theta of w. And we have to prove this also. For that we have to find out these terms. Okay, so given x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, we can find out delta x by delta r. Delta x by delta r क्या हो जाएगा? Cos theta. And delta y by delta r is sin theta. And delta x by delta theta is minus r sin theta. Delta y by delta theta is r cos theta. तो डेल्टा W by delta R whole square हमें निकालना है. उससे पहले we can find out delta W by delta R. ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि डेल्टा W by डेल्टा R क्या होगा? डेल्टा F by डेल्टा X डॉट डेल्टा X by डेल्टा R प्लस डेल्टा F by डेल्टा Y डॉट डेल्टा y बाय डेल्टा r होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं डेल्टा f बाय डेल्टा x. हमारे पास डेल्टा x बाय डेल्टा r है cos थीटा एंड डेल्टा f बाय डेल्टा y we have sin theta. So we can write delta w by delta theta also. Delta w by delta theta, that will be equals to delta f by delta x, delta x by delta theta plus delta f by delta y and delta y by delta theta. So this will be equals to delta f by delta x cos theta. Oh sorry, delta x by delta theta क्या है? माइनस r sin theta. माइनस r sin theta है and delta f by delta y dot delta y by delta theta है r cos theta. तो दोनों में से r कॉमन आ रहा है. In the next step we will take r common and we will bring out here. तो उससे पहले हम क्या करते हैं ना कि इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं
और अभी जो नेक्स्ट आएगी वो इक्वेशन नंबर 2 दे दो। सो आर कॉमन था, हम एलएचएस में लिया है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1/r डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स साइन थीटा प्लस डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई कॉस थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमने देखना है कि हमें एलएचएस में क्या चाहिए था, इसका स्क्वायर चाहिए था, और आरएचएस में जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है उसका लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर चाहिए था। तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहले उनको स्क्वायर करेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे, देन वी गेट एलएचएस में। तो हमें जो चाहिए था वो हमारे पास आ गया कि डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा थीटा होल स्क्वायर। अब आरएचएस के लिए हमें ये सारी टर्म्स लिखनी होंगी। तो हमारे पास आरएचएस में टर्म्स हैं डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स कॉस थीटा प्लस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई साइन थीटा का whole square, and another term we will add, that is minus delta f by delta x sin theta plus delta f by delta y cos theta whole square। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आरएचएस। हमने आरएचएस की दोनों टर्म को स्क्वायर किया और उनको ऐड कर दिया। सो we will further solve RHS delta f upon delta x whole square cos square theta plus delta f upon delta y whole square sin square theta plus 2 delta f delta x delta f delta y cos theta sin theta plus delta f by delta x whole square sin square theta plus delta f delta y whole square cos square theta plus, so here we are having minus sign, so we get minus 2 delta f by delta x delta f by delta y sin theta cos theta, or we can write cos theta
साइन। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म सेम है बट विथ अपोजिट साइन, सो दे गेट कैंसिल। बची हमारे पास ये फोर टर्म्स। इनमें भी हमने देखा कि डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन है। एंड डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इन दोनों टर्म में कॉमन है। So we will write in the next step that delta f by delta x whole square, and inside bracket we have cos square theta plus sin square theta plus delta f by delta y whole square cos square theta plus sin square theta. तो ये जो है ना डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स होल स्क्वायर एंड डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई होल स्क्वायर, क्या ये इनके साथ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमारे पास आ गया डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई होल स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना था। एलएचएस तो हमें पहले ही मिल गया था। ऑन सॉल्विंग आरएचएस वी गेट व्हाट वी हैव टू प्रूव। जो हमें प्रूव करना था वो मिल गया। ठीक है, hence proof this we have to prove. So this is for the today lecture, and in the next lecture I will be discussing some more problems related to the differential calculus. And please like my videos and subscribe my channel for watching further videos.